बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको NAR साइंस स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे बायोलॉजी पार्ट 1 के FSC के। पूरी बुक के हैं, शॉर्ट हैं एंड लॉन्ग है। पेपर ऑलमोस्ट इन्हीं में से आता है, इम्पोर्टेंट है बहुत। अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आप अगर इन्हें नोट करना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो डाउनलोड कर लें। इससे पहले हमने बायोलॉजी पार्ट 2 के गेस्ट भी बताए थे, वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी है इसी चैनल पे। अगर आपको कोई दोस्त पार्ट 2 में है तो आप उसके साथ शेयर कीजिए उसे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मज़ीद ये कि उसमें हमने 3 पॉइंट बताए थे पेपर हल करने से पहले, कि पेपर हल करने से पहले इन 3 पॉइंट्स को ज़हन में रख के पेपर हल किया जाए तो आपका पेपर अच्छा होगा। वो 3 पॉइंट्स, अभी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वो 3 पॉइंट्स ये थे कि क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल का होना ज़रूरी है, उसके साथ दूसरे नंबर पे डायग्राम, और तीसरे नंबर पे डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंस वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। यही 3 पॉइंट थे। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे पार्ट 2 बायोलॉजी की गैस की वीडियो बनी पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं और उससे मदद ले सकते हैं। तो चलें आज हम आपको पार्ट 1 बताते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद मुआविया। चलें चैप्टर वाइज पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप नोट करना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। हाउ डज थियरी डिफरेंट फ्रॉम द लॉ? व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट? Differentiate between chemotherapy, radiotherapy and gene therapy. What is hydroponic technique? Give its importance. Write a note on vaccination. Define biome with an example. Define phyletic lineage and biodiversity. Differentiate between deductive reasoning and inductive reasoning. इसके बाद chapter 2 के define biochemistry, give importance of biochemistry, differentiate between glycosidic and peptide bond, define lipids, give 2 rules of waxes, differentiate between saturated and unsaturated fatty acids, give the structure of lecithin. इसके बाद यूनिट नंबर 3, what is the active site of an enzyme? Differentiate between apoenzyme and holoenzyme. What are cofactors and activators of enzyme? How does an enzyme accelerate a metabolic reaction? Write 4 characteristics of enzymes. What is induced fit model? Who proposed this model? How does high temperature affect enzymes activities? What is the role of pH in enzyme action? Give optimum pH values for any 2 enzymes action. What are enzymes inhibitors? Give 2 examples. Differentiate between reversible and irreversible enzyme inhibitors. Differentiate between competitive and non-competitive enzymes inhibitors. Unit number 4. Write down silent features of cell theory. Differentiate between phagocytosis and pinocytosis. Give chemical composition of primary and secondary cell wall. Give 3 functions of smooth endoplasmic reticulum. Define storage disease with 2 examples. What is location of centrioles in the cell and what is their role? Differentiate between chromoplast and leucoplast. Differentiate between cisternia and cristia. What are peroxisome, polysome and ribosome? Unit number 5. Define species and virology with examples. Give biological classification of cord. What is binomial nomenclature? What are 2 rules of nomenclature? What are prions? Differentiate between lytic phage and lysogenic phage. Write down symptoms and prevention of hepatitis. Unit number 6. Write 4 postulates of germ theory. What are mesosomes? Describe their function. Mesosome के function पूछ रहा। Write misuse of antibiotics. कोई से 3 या 4 आप लिख सकते हैं। What are trichomes? Give the structure and function of heterocysts.
What are super blue-green algae? Cyanobacteria. Give its importance. इसकी भी importance है. What are canoflagellates? What are tritonymphs? Tritonymphs. Give their importance. इसकी importance ही पूछ रहा है. Write two characteristics of ciliates. Differentiate between micronucleus and macronucleus. Differentiate between foraminifers and actinopods. What are epicomplexins? Give one example. उसी की example. How algae differ from plants? What are red tides? Give structure and function of diatoms. Also write three characteristics of diatoms. What are kelps? Name the parts of thallus of a kelp. Green algae are considered ancestral organism of greenland plants. Why? What is cholera? Give its significance. What is importance of algae? Alga. Unit number 8. What are lichens? Give their ecological importance. Differentiate between chaerogamy and plasmogamy. Differentiate between rusts and smuts. What is budding and parasexuality? What are toadstools? Give example. What is histoplasmosis? Give its causes. Give scientific name of yeast used in genetic research. Define hypha. Give their two types. What is mycorrhiza? Give its importance. What are dikaryotic hypha? Give example. Unit number 9. Why bryophytes plants are called amphibious plants? How spores of mosses differ from spores of liverworts? What is alteration of generation? Give its significance. Why sphenopsida? What is sphenopsida are called arthrophytes? Differentiate between microphylls and megaphylls. Define double fertilization in angiosperms. Give its importance. Differentiate between monocot stem and dicot stem. Unit number 10. Write the importance of sponges. Define polymorphism with example. Write down the importance of corals. Differentiate between infestation of and disinfestation. Write names and uses of any two useful insects. Define nymph and metamorphosis. Give three characteristics of chordates. Give the role of swim bladder in bonifishes. Give two chimerical importance of sharks. Define regeneration and metaporite. Write names and terms of any two harmful molluscs. Differentiate between polyps and medusa. Differentiate between polyps and medusa. Differentiate between coelomates and acoelomates. Differentiate between diploblastia and triploblastic animals. Unit number 11. Define bioenergetics. Differentiate between photosynthesis and respiration. Define photosynthesis with equation. What is compensation point? Where it occurs. Write down the molecular formula for chlorophyll A and B. What are necessary pigments in plants? Give their importance. Differentiate between importance and action spectrum. What is photosystem? What is Z-scheme? Why is it called so? What is fermentation? Explain its types. Unit number 12. Distinguish between nutrients and nutrition. Write components and function of saliva. Name various types of the salivary gland in man. Differentiate between peristalsis and antiperistalsis. How hunger pangs are caused. What is heartburn or pyrosis? Name types of cells present in gastric glands.
What prevents the wall of stomach from being digested? How secretion is produced in man? What is its effect on pancreas in man? What is the role of liver in the digestion of food? Unit number 13. Differentiate between organismic and cellular respiration. How is air better respiratory medium than water? What is photorespiration? Name organelles involved in it. Write the names of its products. What are rubisco? Write its importance. Define respiratory surface. Give three properties. Differentiate between cutaneous and pulmonary respiration in frog. What are countercurrent exchange and parabronchi? Differentiate between diaphragm and pleura. Name some respiratory disorders and explain one. What is emphysema? Write its symptoms. What is diving reflex? What changes occur in animal during diving reflex? Unit number 14 and last unit. Differentiate between water potential and fluid potential. Differentiate between plasmolysis and deplasmolysis. Differentiate between apoplast and symplast pathway. Differentiate between single and double circuit heart. What are blue babies? What are blue babies? What is brain hemorrhage? Give its two preventive measures. ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, सारे इम्पोर्टेंट है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। वैसे भी ये पास पेपर से चुने गए क्वेश्चन है, अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के। ये ए बी पार्ट 1 है, जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही आएगी, ये तो बस एक दिखाया गया कि पेपर में ऐसी क्वेश्चन आता है। हो सकता है ए पार्ट ये हो, ये डिपेंड करता है ना बाइस गुजरा वाला कैसी स्कीम दे रहा है। हर साल इनकी स्कीम आती है किसमें से लॉन्ग आना है, तो उसके मुताबिक ए पार्ट हो या बी पार्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन ही हो और उसके फुल नंबर हो, या ए बी पार्ट हो या ए बी सी हो, लेकिन मोस्टली ए बी पार्ट होता है, 2 पार्ट होते हैं उसके। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है ये भी। How study of biology helped mankind to improve production of food? Define cloning, discuss its type and importance. Describe the importance of water of life. Describe acylglycerol in detail. Describe primary and secondary structure of proteins. Compare DNA and RNA. Explain different types of RNA. Question number 4. Write a note on endoplasmic reticulum. What are plastid? Explain the structure and function of chloroplast. Question number 5. Describe the structure and function of mitochondria. Differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. 6. Describe life cycle of a bacteriophage. How HIV is transmitted. Give a sketch of infection cycle of HIV. Define hepatitis. Describe its symptoms, cause and type. Describe different classes of bacteria on the basis of flagella. Discuss the process of nutrition in bacteria. Describe different physical and chemical methods of control bacteria. Write down characteristics of cyanobacteria. Explain taxonomic status of fungi. Discuss different methods of sexual reproduction in fungi. Write 4 economic gains and losses due to fungi. Give adaptation of fungi on land. Describe land adaptations of bryophytes. What is alteration of generation? Give its significance. How the evolution of leaf took place. And list steps involved in the evolution of seed. Describe in detail cyclic and non-cyclic phosphorylation. Draw and describe Calvin's cycle in photosynthesis. What is glycolysis? Sketch its various types. Steps इसके बताने हैं जी. Draw the sketch and explain Krebs cycle. Give digestion in the cockroach. Describe digestion in
oral cavity of man. Describe absorption of digested food in small intestine. Write a note on anorexia nervosa. ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इसके बाद बुलिमिया नर्वोसा है, ओबेसिटी है। ये मतलब 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है। इसके बाद वाई ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी। 18 वाला लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड, डिस्क्राइब लिम्फेटिक सिस्टम, राइट इट्स फंक्शन, डिफाइन इम्यूनिटी, गिव इट्स टाइप्स। तो ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन। आप ये अच्छे से कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। आपको इधर उधर से करने की ज़रूरत नहीं है। बुक लें, उस पर निशान लगाएं ये क्वेश्चन और इनको अच्छे से तैयार कर लें। डायग्राम साथ बनाएं, अगर है उसे अच्छे से लेबल करें, एग्जांपल्स दें, उसके बाद डिफ्रेंशिएट अच्छे से करें। जो पार्ट 2 की गैस की वीडियो है वो अपलोड कर दी जा चुकी है। अगर कोई फ्रेंड है तो उसको आप बताएं, आपके लिए भी वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल के साथ बताया गया कि कैसे पेपर सॉल्व करते हैं, या पेपर सॉल्व करने से पहले जो चंद बातें उनको ज़हन में रखते हुए पेपर सॉल्व करें। तो ये सारी बुक के क्वेश्चन थे, फुल बुक में से इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। आप ये करिए, आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।